हाय, मैं हूँ स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। मेडी सर्कल एक हेल्थ केयर मीडिया कंपनी है जो आपके पास तरह-तरह के हेल्थ केयर रिलेटेड टॉपिक्स को लेके आता है। जहाँ हम एक तरफ डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स की ज़बानी ये जानना चाह रहे होते हैं कि किस तरह से आप बीमारियों से बच सकते हैं। हम तरह-तरह की बीमारियों के स्पेशलिस्ट, उनके एक्सपर्ट से बात करके आपको उन बीमारियों के होने वाले सिम्पटम्स, प्रिकॉशंस के बारे में बताते हैं, साथ-साथ ट्रीटमेंट्स भी बताते हैं। और ये कोशिश करते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन धीरे-धीरे सिकनेस से वेलनेस की तरफ जाए। इसके साथ ही साथ मेडी सर्कल में हम यंग एंटरप्रेन्योर्स की जो जर्नी है, उसे भी सेलिब्रेट करते हैं ताकि हमारा जो युवा पीढ़ी है, हमारा जो यंग इंडिया है, उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर कर सकें। हेल्थ केयर फ्रेटर्निटी से रिलेटेड जो जुड़े हुए मूवर्स एंड शेकर्स हैं, जो चेंज मेकर्स हैं, उन्हें मेडी सर्कल पे हम आमंत्रित करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका जो ये सफ़र है वो कैसा रहा, उन्होंने सक्सेस पाने का उनका जो मंत्रा है वो क्या है, उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले प्रॉब्लम्स को, कठिनाइयों को किस तरह से फेस किया और बिना हारे वो अपने मिशन की तरफ आगे ही बढ़ते गए। इसी सिलसिले में आज हम इंटरनेशनल यूथ डे सीरीज कर रहे हैं। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने सबसे पहले इसे मनाने की सिफारिश की थी। तब से दुनिया भर में युवाओं के लिए ये डे मनाया जाता है। इसमें हम युवाओं को एनकरेज तो करते ही हैं, साथ ही साथ उनके कल्चरल और लीगल इश्यूज के बारे में उन्हें जागरूकता, उन्हें अवेयर भी कराते हैं। इस साल 2021 का इंटरनेशनल यूथ डे का थीम है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ। यानी कि इस साल हमारे जो यंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी जिन्होंने काफ़ी सक्सेस पाया है, उनसे हम बात करके ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने हेल्थ केयर की दुनिया में खासकर किस तरह से नए सॉल्यूशंस लेकर के आए हैं और किस तरह के नए इनोवेशंस लेकर के आए हैं। इस पहल में आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर विश्वल पटोले से। डॉक्टर विश्वल पटोले पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हैं और दिल से इंजीनियर हैं। उन्होंने विभिन्न स्पीड स्केटिंग एकेडमिक्स, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना एकेडमी में, उसी तरह से बैडमिंटन एकेडमिक्स और हॉस्पिटल्स में और हेल्थ केयर एट होम नामक कंपनी में भी काम किया है। उन्होंने हाल में ही वी रिहैब टेक की स्थापना की है, जिसका मिशन टेक्नोलॉजी का यूज करके किस तरह से आप घर में बैठ के ही ईजी और अफोर्डेबल फिजियोथेरेपी पा सकते हैं अपने पैरों के स्वास्थ्य के लिए, जो खासकर जो फिजियोथेरेपी जरूरत पड़ती है उसका रिक्वायरमेंट पूरी तरह से पूरा कर सकते हैं। हाय एंड वेलकम टू मेडी सर्कल डॉक्टर विश्वल पटोले। Hi, Smita. Thank you for your warm welcome. I'm really excited to be here with you. So Dr. Vishal, my first question with you is कि जिस तरह से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में तरह तरह के इनोवेशंस लेकर के लोग आ रहे हैं, स्टार्टअप्स हैं, आपके जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एंड आपकी जो एंटरप्रेन्योर जर्नी है वो कैसी रही है अभी तक? So, on to contribution to healthcare, I will start with right after when I graduated. I started working in Mumbai in healthcare at home, like I said in the introduction, like you said. So, basically, as a physio, I've been helping people get back on their feet, improving their quality of life. And in that company in Mumbai, I remember a patient. She just had her total knee replacement surgery done. ठीक है, तो और वो एकदम मतलब क्यूटेस्ट गुजराती दादी जो होती है, शी वाज दैट द क्यूटेस्ट गुजराती दादी यू कैन एवर मीट। तो उनसे तो उनको घर पे जाके हमें विजिट करना होता है, फिजियोथेरेपी देनी होती है। तो उनसे मिलने के पहले मैंने एक्चुअली अकेले कभी भी कोई भी ओल्ड एज पेशेंट्स, जेरियाट्रिक पेशेंट्स कभी नहीं देखे, स्पेसिफिकली पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स कभी नहीं देखे। तो मैं तो उस टाइम पे बहुत नर्वस थी, आई वाज वेरी नर्वस देन, एंड जस्ट द नाइट बिफोर आई वेंट टू 20 at least 20 research papers, and when I was in the elevator, I was still going through this mantra that you can do this, you have done a lot of research about this. So I met this dadi that day, I evaluated her, the session went very well, and after a month, एक महीने के बाद जब मैंने उनका evaluation फिर से किया, बस सच्ची में ट्रस्ट मी, आफ्टर अ मंथ जिस तरीके से उनके आउटकम मेजर्स, उनका मोरल जो बूस्ट हुआ है,
मैंने कभी भी पूरे फिजियोथेरेपी में आज तक कभी नहीं देखा. बिल्कुल. You know, like old people are like, yes, old people are like, हाँ अभी तो हम तो अभी बूढ़े हो गए, अभी बस हो गया, अभी क्या ही करना है, right? But she went from that to नहीं, आज तो मैं साइकिल चला के रहूंगी. बिल्कुल. So that was very rewarding for me. That experience is, you know, it kind of fulfilled the purpose of my life. Yes. So then there was no stopping there, and it was most fulfilling journey so far. And to see people get back on their feet because of me, improving their quality of life. And as an entrepreneur, I want to continue doing that. And the biggest, uh, you can say, a pandemic in India is osteoarthritis. Okay. Right. So वात म्हणतात त्याला मराठीमध्ये. तर so what happens is when you wear faulty footwear, when and you know, walk on uneven surfaces or anything, and you have a faulty footwear, you're bound to have your feet at an angle that is not very comfortable for you, and it is going to continue if you're going to continue wearing that same footwear. Like हम high heels पहनते हैं, पर insoles वगैरह जो रहते हैं उसमें, they're not so much comfortable and not even corrective. Yes. Right. So, so what we are bringing here with rehab for foot health specifically is customized orthopedic insoles and customized orthopedic slippers, Okay. completely customized to the patient's feet. Okay. Apart from this, we have also made a smart insole, Okay. which will help us in gait tracking. Gait मतलब जैसे हम चलते हैं, हमारा चलने का तरीका, the pattern of our walking is termed as gait. तो जिस तरीके से हम चलते हैं, हमारे बॉडी में काफी सारी चीजें पता चल जाती है. बिल्कुल. Right, like knee pain है, hip pain है, low back pain है, even neck pain. In pain, we walk differently as compared to when we walk normally. So that's what this device will help us get the information of, and as well as the fall risk in geriatric patient, the injury risk in athletes. Okay. And being an athlete myself, I'm very close to that part of the smart and soul of getting that sports analytics thing done. Okay. So that is there. And well, coming to the entrepreneurial journey, well, I have one word for it, and it's adventurous. मैंने कभी नहीं सोचा था when I started working right after graduating that my work life will ever be adventurous. Okay. You know, living in the moment every day and doing multiple things. So, you know, like in a job, you need to complete a task that you are given and something that you have a domain expertise of, right? But when we started rehab, well, that's when I started enjoying my work life as well. You know, like I'm wearing different hats in my startup right now, right from digital marketing to sales to seeing patients outcome measures. All the patients all the physiotherapists that are working with me are doing great. The patients are happy, they are getting pain free, they are recovering, everything I have to see. So that is something very rewarding. So yeah, the journey overall has been full of learnings, and it has been very rewarding in terms of financial freedom, the creative freedom that I've got. I mean, after I started rehab, I found that I'm pretty good at designing things. You know, like social media, graphics and all that, whatever it is needed. I'm very good at that. So I'm even exploring myself, everything about me, every talent that I have right after I started rehab. Okay. So, as usual, there are a lot of challenges faced by any entrepreneur. Like, no doubt, you might have also faced अपने बहुत सारे challenges face किए होंगे. Physiotherapy industry के अपने ही बहुत सारे challenges हैं. Burnout, stress है, documentation है. कई बार वो जो होते हैं वो कई बार ट्रेंड से वो अपडेटेड नहीं होते हैं. सपोर्ट का लैक होता है. अवेलेबिलिटी जो होती है वो सपोर्ट की काफी कम होती है. और ये अभी भी एक ग्रोइंग सेक्टर है. इट इज लाइक इसे कहा जाता है कि भाई इट इज जस्ट सीइंग द सन. मतलब ये काफी हद तक
अभी स्टार्ट हो रहा है सीइंग द सनराइज व्हिच इज स्टिल अनएक्सप्लोर्ड, जो साइंस ऑफ फिजियोथेरेपी है कहीं, लेकिन इनके डिमांड्स काफी बढ़ Yes. रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट के और हर तरह के पेशेंट्स के, चाहे वो किसी सर्जरी से रिकवर कर रहे हो या वो किसी क्रोनिक डिजीज से सफर कर रहे हो, जैसे आर्थराइटिस हो गया, उन्हें भी फिजियोथेरेपिस्ट की एडवाइस और सेशंस और सपोर्ट लगता है। तो इस स्पेशली ये जो आपने बनाया है, उसमें इस एंटरप्रेन्योर जर्नी में आपने किस तरह के चैलेंजेस फेस किए और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या दिए आप? So as a physio, I'm telling you, the only challenge I face, and it is very difficult, I'm still finding it very difficult to get, get a hold of it, is patient adherence. Okay. मतलब लोग आते हैं, they consult us, they take 2 to 3 sessions, they feel better, then they go home. But that's not it. They go home and they start doing everything they used to do before getting injured, and they haven't seen the fault in it. Yes. तो पोस्ट रिहैब जो पार्ट था, उसमें people tend to skip it, come back to us, and it's today. But the as an entrepreneur in rehab, I did not have a tech background at all. Even in 11 12 of science लिया था, मैंने computer science नहीं लिया था. So so uh, so that was the biggest challenge, not having a technical background. But thanks to my PPSI friends who taught me coding as well as he can to a non-technical person, and also my co-founder Sukanya, who is a serial entrepreneur herself, and she's also my best friend. She always keeps pushing me to do various things to get out of my comfort zone, and without their support today in tech, in managing finances, in preparing for pitching, even for today's interview, without them, I don't think I would have reached at this point of my entrepreneurial journey in healthcare industry at all. Okay. So जिस तरह से आपने वी रिहैब टेक की शुरुआत की, ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कहीं ना कहीं हेल्थ केयर में अपनी शुरुआत कर रहे हैं। उन्हें भी तरह तरह के चैलेंजेस आए होंगे, बिल्कुल ही आप ही की तरह, और उन्होंने भी टीम वर्क और बिल्कुल तरह तरह के जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मेंटोरशिप, इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स, जैसा आपने बोला आप IIT कानपुर के इंक्यूबेशन प्रोग्राम से एसोसिएटेड है, जुड़े हुए हैं। ऐसे कई सारे मेंटोर्स, इंक्यूबेटर्स हैं जो इन तरह के स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स को मेंटोर कर रहे होते हैं, उन्हें उनके मंजिल की तरफ ले जा रहे होते हैं। ऐसे फेलो एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? Well, I've before starting my entrepreneurial journey myself, I went through a lot of uh, motivational videos, specifically from Bezos, and he said in this interview, "Be original. Do something you're passionate about. Don't chase something that's trending today." That's because जब हम वो चीज करते हैं जिसके लिए हम पागल नहीं, हम पैशनेट नहीं है, if that is not the purpose of your life, we tend to give up very easily when times get tough. So that stuck to me very well, and I've made it a purpose of my life to do something that I am passionate about, that I am enjoying. Because obviously, if you don't love it, you won't make it through the long periods of pain that are inevitable. So I'll relieve you from all this stress of answering my questions, Dr. Vishwal, and would be going on in a rapid fire round where I would be saying one word, and whatever word that comes to your mind, the first word that comes to your mind, you would be saying that for me. So hope we can Okay. do this. Yeah, sure. I'm So ready. the first word is success. Well, there are two parts of success for me. One is materialistic, and that's owning a bunch of Mini Cooper, the convertible ones. And spiritually, I want to fulfill the purpose of my life every day. Life, Purpose, entrepreneurship, life, team, support, India, home, and the last one, healthcare.
should be accessible. Definitely. So there are lot challenges which are associated with the healthcare industry. Accessibility, affordability, Right. availability being some of them very important factors. But I think definitely with contributions of Dr. Vishwal Patole's like entrepreneurs, it can be definitely taken to the next level. And there will be definitely challenges everywhere. But we can also have the hopes high and try disrupting the system and try those things which are actually driven by passion and which is actually going to add some value and solve some problem. So thank you so much, Dr. Vishal Patole, for joining us today for this International Youth Day awareness program at MediCircle. We really had a very good time with you and we wish you all the best for all your future endeavors. Thank you so much, Smita, for having me. Like I said, I was very excited to be here today. Thank you so much. We were also very excited and I hope you also enjoyed this session. Yes, I surely enjoyed the session, especially the rapid fire. Thank you. Thanks, Vishal.